There you go. Look at the options, you will understand it. It's not very tough. Try to give examples of what they are asking, then you understand this. This is correct. Hello, Assalamu alaikum, Alia. How are you? Alaikum sir, I'm fine. How are you? आज इंटरनेट ठीक है आपका? जी सर. See here. The correct option for a redox couple. ठीक है. What is redox couple? Redox couple में क्या होता है? For example, if you have copper 2 plus, copper 2 plus किसमें reduce होगा? Copper में reduce होगा. This is a redox couple. Copper उसका फिर copper 2 plus. Now इसमें पहला option है both are oxidized form involving same element. So no, both are not oxidized form. This is incorrect. Both are reduced form. No, again this is, both are not reduced form. Both are reduced and oxidized for the same element. That is true. The oxidized form and reduced form is also what involving copper itself. Element by A, one is oxidized form and the other is reduced form. So this is correct. Cathode and anode together, this does not even make sense. So this is correct. Try this. Which of the following reaction is a decomposite redox reaction? Decomposition reaction is like 10 standard ka syllabus. Yes, Iram and Alia, correct. Yes, Navi, correct. Very good. It's very easy, na? Because in a decomposition reaction, you will only have one reactant, and this will give you multiple products, right? So here we have multiple reactants, so this cannot be the correct option. Here we have only one reactant, so this is true. This is two reactants, not correct. This is two reactants, not correct. Try this. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? Iram has given an answer. You have changed your okay. Iram. Has given an answer.
answer. See. See here in CH4, hydrogen will be what? Plus 5 plus 1 into 4. Why? 5 plus 1 because between carbon and hydrogen, which is more electronegative, obviously carbon is more electronegative than hydrogen. And since carbon is more electronegative than hydrogen, then it will be having minus, right? And hydrogen will be having plus. So is equal to 0. So x is equal to minus 4. And in CCl4, the other way around, x plus 4 into minus 1 because chlorine is more electronegative. This is equal to 0. So x will be equal to plus 4. So it is going from minus 4 to plus 4. Okay. Option B is correct. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Yes. Right. क्या लिया इरम आपने आंसर किया ये अभी अभी दिस क्वेश्चन इसी सवाल के लिए Yes, sir. look at H2. So what is H2 doing here? H2O2 is getting converted to H2O. So what is happening with oxygen here? Oxygen in H2O2 it will be having a -1 charge or -1 oxidation state. In H2 it will be having -2. So what is happening? Here oxygen is what here the H2O2 species that oxygen is what getting reduced. If oxygen is getting reduced, then it acting is therefore acting as oxidizing agent. Yes or no? सर आपकी आवाज कट रही है. -2. Is it lagging for everyone? No, sir. Also, of hydrogen peroxide. No? Hydrogen peroxide is getting reduced, it will act as oxidizing agent. And in H2O2, that means you have to look at the different another species, O3. O3 में देखते हैं क्या हो रहा है. O3 is getting converted to O2. O3 the oxidation state of oxygen is going to be what? Next to 0 होगा. लेकिन
यहाँ ये +1 C is 0. ठीक है. What is happening in the second? Second situation में H2O2 it is converting Ag2O to Ag. That means Ag को reduce कर रहा है. Reducing agent है यहाँ पे. Here if basically H2O will get converted from -1 to -2. It's saving agent होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन ए में है. O3 is getting converted to O2. You note this down. This is oxidizing. This here it is acting as here it is oxidizing and here it is reducing. The correct order of n compounds in its decreasing order of oxidation state. So here you have to calculate the oxidation state of all the nitrogen atoms and arrange them in decreasing order. Dropping base. Okay, I have got the answer. Alia, waiting for you.
ध्यान से देखते हैं. So we have HNO3. HNO3 में -6 and +1 +5 हो जाएगा. Then we have NO. NO में it will be +2. N2 में 0. NH4Cl. NH4Cl में कितना हो जाएगा? -1 और +4. -1 +4 उधर जाके -3 हो जाएगा. Yeah, ये is the correct option. 5203. Try this. Hot concentrated sulfuric acid is a moderate strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? करेक्ट. देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. H2SO4 से जो I mean whatever is other than H2SO4 ना, you look at that compound. Copper है, तो copper के साथ क्या हो रहा है? तो copper is in zero oxidation state. Here it is in +2. यहाँ पे सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे इट इज इन +4, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है. कार्बन इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +4. Here if you look at calcium, here calcium it is in +2. Here also calcium it is in +2. So in the D option it is not showing any oxidizing behavior. Got this? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Try this. Okay, Ram. Alia, waiting for your answer.
Okay, see. Which of the following reactions are disproportionation reactions? So disproportionation reaction क्या होगा? The same species will be getting oxidized as well as reduced. Same species. Therefore, the first option is obvious. Copper plus say oxidation, reduction. This is correct. Now here MnO4 2 positive, MnO4 negative, MnO2, KMnO4, K2MnO, KMnO2, KMnO4. Okay, ठीक है. ये लास्ट वाला तो नहीं होगा. लास्ट वाला भी हो सकता है. Okay. Here we have MnO4 2 positive दिया इन्होंने. MnO4 2 positive 2 negative होना चाहिए, यहाँ तक हमको लगता है. But still let us see. MnO4 X plus 4 into minus 2, which is equal to plus 2. So it will be X minus 8 plus 2. X is 0. This convert to minus होगा यहाँ पे. Plus oxidation state हो ही नहीं सकता. Manganese does not have that many number of electrons to lose. So it will be minus 2 here, or X will be equal to plus 8 plus 2, that is equal to 6. Okay. In MnO4 it is not. In MnO4 it is going to be plus 8, and in MnO2 it is going to be plus 4, right? So this is also oxidation and reduction. KMnO4. So KMnO4 has KMnO4 में क्या होगा? Have X plus, yes, you will have X plus what else? By the way, MnO4 negative 1, तो ये plus 7 जाएगा, 8 नहीं जाएगा. But still it is oxidation reduction. MnO4 X minus, sorry, X on X plus 1 plus minus 8 is equal to 0. So X will be equal to plus 7. Now, if it is already in plus 7, इससे ऊपर नहीं जा सकता. It can only get reduced because manganese has only 7 electrons in the D and S section मिला के. तो ये तो हो नहीं सकता है. We have the MnO4 negative. MnO4 negative again plus 7 oxidation state. That is why it cannot go into the lower oxidation state. So E and B option will be correct. Option number B. Both of you have done it correctly. So आगे बढ़ते हैं. For the redox reaction, the coefficients of the reactants for balanced equation is. ये बताइए आप लोग कर पाएंगे? Alia, Nabil, and Aaron. हाँ guys, tell me. चलिए देखिए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा. ट्राई कीजिए. Okay, Alia needs explanation. What about others? Aaron and Nabil, should I explain this or will you try? Answer. Experience. Okay. पहले ना अलग अलग स्पीशीज लेते हैं. वाटर को छोड़ देना है, ठीक है. प्लीज लीव वाटर राइट नाउ. MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव. MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग? ये +7 था, +7 से कहाँ चला गया? +2 चला गया, राइट. सो we are adding electrons. Reduction हो रहा है, यानी कि gain of electron. How much gain of electron will be there? Will be 5 gain. So we will do +5 electron. When we look at the other species, 2O4 2 negative से CO2, C2O4 2 negative. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालिएगा तो 2x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. 2x minus 8 is equal to minus 2.
and 2x will be equal to 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 minus 2 x is equal to 6 by 2 that is equal to 3. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. ये प्लस 3 से कहाँ जा रहा है? We are going from C2O4 to negative C2O4 to negative to CO2. So before balancing, before adding the electrons, you will balance the number of carbon atoms. Only carbon atoms. You don't need to balance anything else. Okay. Whatever species is getting oxidized already, only that. So 2 CO2 कर दिया आपने. Now for one carbon atom, the change in oxidation state is what? It is going from +3 CO2 में +4. For one carbon atom, the electron needed is 1. For two carbon atoms, you will need 2 electrons. So 2 electrons will be leaving like this. Now you need to balance the number of electrons. तो दोनों में आप क्या कीजिएगा 10 multiply sorry यहाँ पे 2 multiply कीजिए यहाँ पे क्या multiply कीजिए 5. So you'll get the new equation as 2MnO4 negative gives Mn2 positive 5 इलेक्ट्रॉन भी कर ले कट जाएगा वो plus 10 electron gives 2Mn2 positive. Then here you will do 5C2O4 to negative gives 10 CO2 plus 10 electrons. Electrons will be cancelled. Now you are going to write 2MnO4. यहाँ पे लिख देते हैं 2MnO4 negative plus 5C2O4 to negative gives 2Mn2 positive plus 10 CO2. ठीक ना हो गया. Now you are going to balance the charges. Once you have balanced the number of electrons, you will balance the charges because these are ions. Now, if I look at the charges here, I have 2 negative, or you have to pass C2 for 2 negative, and minus 10, right? So the total charge that I will be getting is equal to what? Minus 12. Does this make sense? Total charge? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes. Okay. And if I look at the total charge here we are having plus 4. 2 Mn2 positive, so plus 4. Now we have to add H plus in the reactant side. So that minus 12 becomes plus 4. Minus 12 से plus 4 में कितना distance होगा? 16, yes or no? Number line में आप minus 12 से plus 4 जाना चाह रहे हैं. So we'll have to add 16. Yeah, makes sense, yes or no? है कि नहीं? So we'll add Yes. 16H plus. We'll add 16H plus. ठीक है. So now you have got the answer. 2MnO4 negative. फिर बाकी यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा. For example, you will add water here. तो कितना water लगेगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे you have only 16 hydrogen. You will get 8 water molecules. The reaction will be balanced. You can count the number of oxygen atoms and everything. So the correct answer will be 2, 5, and 16. So that is D. Understood, Alia and Kiram? Yes, sir. Yes, sir. First balance the electrons, then balance the charges. One. Try this one.
You guys are doing right, Ali and Aaron? Yes, sir. Yes, sir. All guys done? Both of you have got D option. C. Yeah. Yeah. So CR2 7 2 negative, CR3 positive. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्पीड क्रोमियम का होता है +6 और +6 से अपना जा रहे हैं going to +3. That means in oxidation speed of 3, but we are having 2 chromium atoms. The number of electrons that will be used will be using 6 electrons for this. So 6 electrons, and we're going SO3 2 negative to SO4 2 negative. Yes, tell me. No, sir. So 3 2 is 6, 6, and just +4, just +6 will be requiring 2 electrons. So I multiply 3 here, and the equation is 3 2 negative gives 3 SO4 2 negative plus 6 electrons. The final equation will be 6 electrons, 6 electrons will be cancelled. Final equation right here. Cr2O7 2 negative plus 3 SO3 2 negative gives 2 Cr3 positive plus 3 SO4 2 negative. Now we'll calculate the charges to -2 and 3 to the -6. So -6 would be -8. Here we are having 3 to the 6 and 0. So we will be needing 8 H plus ions. Yes, 138 is correct. 138. So will not redox reaction में देखिए we have from 2023 में भी आपके पास इस तरह सवाल आए हैं and I have gone till 2020 2014. उससे पीछे जाने का कोई तुक नहीं बन रहा था. It was at least like one question, and some of the years they did not ask any question from redox reaction. So what rather I am going to do is we'll start with chemical bonding. We'll do some questions on chemical bonding, and then we can end with this. Okay.
actually. So just give me a second. You draw the structure and count the pi bonds, sigma bonds. I'm waiting for your answer. Iram got it wrong. देखिए सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, टू इन यानी कि डबल बॉन्ड साइन, डबल बॉन्ड में एक सा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा. मेक सेंस? इस नो इरम पहले बताइए. Yes. तो टोटल पाई तो तीन हो गया ना, तीन के ऑप्शन को टिक कर देना तो बस. ठीक है इरम, गॉट इट? ये सुनो. Yes, sir. ठीक, अगला सवाल भी है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट है रिगार्डिंग द ब्रेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, ए बी बॉन्ड. So the strength of covalent bond, it is directly proportional to the extent of overlap. So the overlapping is depends on the number of shell number. कि मान लीजिए अगर आपके सेकंड का कोई है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल का है और फिफ्थ शेल का है, then second shell का overlapping बेस्ट होगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ. The reason is So, because the second shell orbital they will be having, yeah, yeah, sir, voice crack. जी बताएं. Sir, voice crack. How is it now? Yes, sir. So I was saying the strength of covalent bond, it depends on the shell number. Shell number पे क्यों depend करता है? Because if I have 2s, then the 2s will be smaller, and if it is smaller, it will be nearer to the nucleus. If it is nearer to the nucleus, the electron density will be good in overlapping, and they will be attracted by the nucleus very effectively. Both the nucleus, both the atoms which are taking part in the bond formation. The electrons which are taking part in the bond formation, they will be near to the nucleus, and that's why they will be attracted more effectively.
and hence what will happen? The bond will be stronger. Another case is that the bond strength is inversely proportional to number of shell of the size of orbital. So 1s will be most best one first shell, second shell ka 2 and 3. There are a few exception. The exception is in Cl2, Br2, F2, and I2. The exception here is because of lone pair repulsion. For example, if I take fluorine, then this bond is very good, but because of the lone pairs that we are having here, these lone pairs they repel each other, and that is why what will happen when they repel each other, the bond is going to break very easily. Similarly, oxygen single bond, not double bond. But if you have oxygen double bond, then it is quite strong. Similarly, nitrogen triple bond will be quite strong, but nitrogen single bond it is weaker than PP. The reason is same, that is the lone pair electrons. Okay. So try this one. The correct sequence of bond enthalpy of CX bond. Bond enthalpy means which one will require which one is having the highest bond strength. इसका bond strength ज्यादा है, उसी की bond enthalpy भी ज्यादा होगी. Got the answers? A नहीं होगा ना, ये कैसे होगा? Yes. These are the only exceptions. If means if fluorine का exception है. Fluorine ऐसा नहीं कि fluorine से if any other compound तो वहां पे होगा. जैसे मान लीजिए CH3F है, तो कार्बन में थोड़ी ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन. ठीक है. Option C will be the correct answer. CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I. ठीक है. Because here we are having a bond of this is 2p bond है, यहाँ पे 2p 3p bond है, यहाँ पे 2p 4p bond है, और यहाँ पे 2p 5p bond, right? So carbon और iodine का bond it will be like this. Iodine will be having a very larger lobe. That is why the overlapping will not be very effective. Break quite easy. ठीक है. These are the only exception. ठीक है. सिर्फ यही exception. चलिए moving on. Should I revise this? अच्छा ये तो हो जाएगा. ClF3 the number of lone pair electrons on the central atom of Cl will be how much? सबसे पहले देखिए क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे बॉन्डिंग में, एंड जो रेस्ट होंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द लोन पेयर, है ना. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन, and see how many of them are taking part in bond formation, then whatever is remaining divide that by 2. Okay, so chlorine has 7 electrons, इसमें 3 are used for bonding, and this will be equal to 4 divided by 2 is equal to what? 2 lone. ठीक है. Try this. Which one of the following will have the maximum lone pair electron repulsion?
ज्यादा जहाँ पे लोन पेयर होंगे वहीं पे सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा, है ना? क्या लिया? Yes, correct. XCF2 will be having the maximum number of lone pairs. That's why maximum repulsion. How many lone pairs? XC xenon is going to have 8 valence electron minus 2 because 2 electrons are being used for bonding, and it will be what 6 by 2, that's equal to 3. SF4 में you will have to one lone pair. IF5 में you will be having one lone pair. CLF3 में we saw that it is going to have two lone pairs. अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. I'm just going to revise you guys regarding the hybridization, electronic geometry and structure. ठीक है? So सबसे पहली चीज आपके पास ध्यान रखनी है, that is steric number. Fine. Steric number. What is steric number? Number of surrounding atom plus number of lone pairs. ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला. सराउंडिंग एटम कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं. लोन पेयर के कैलकुलेशन में ना, इफ यू हैव एनी चार्जेस इन द कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कुछ चार्जेस, तो चार्ज को भी कंसीडर कर लीजिएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NO2 नेगेटिव की, ठीक है, NO2 नेगेटिव में सराउंडिंग एटम कितना हो गया, सराउंडिंग एटम हो गया 2. सराउंडिंग एटम इट इज इक्वल टू 2. अब हम नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे ना जब, देन आई विल सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है 5, बट आई विल ऐड वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाई वन मोर वैलेंस? ऑक्सीजन का. तो अब ऑक्सीजन के बारे में आपको ध्यान रखना यहाँ पे ये है, ऑक्सीजन इज गोइंग टू हैव मल्टीपल बॉन्ड्स. सही है, ऑक्सीजन के पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं. तो NO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बना पाए, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो यू कैन सी दैट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड, और यहाँ पे दो आपके पास लोन पेयर. तो यू विल हैव स्टेरिक नंबर से कितना आ जाएगा, 3. 5 प्लस 1 हो गया, एंड क्या करेगा, 5 is the number of valence electron, 1 because there is a negative charge here, and the number of bond it is making, it is equal to how much, it is equal to 3. So I will minus 3. This will be equal to 5. ऑक्सीजन के लिए आप 4 ही ले लीजिए, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो आपको बैलेंस हो जाएगा. तो 5 plus 1 will be equal to 6. 6 minus 4 will be equal to 2 by 1. तो आपके पास एक लोन पेयर आ गया. सराउंडिंग एटम 1, लोन पेयर इट इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो इस तरह से. चलिए खैर, अब आपके पास क्या है, विद डिफरेंट स्टेरिक नंबर्स यू हैव टू मेमोराइज द हाइब्रिडाइजेशन. स्टेरिक नंबर आपको दिया रहेगा, यू हैव टू मेमोराइज द हाइब्रिडाइजेशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री. उसके बाद जो शेप है, the molecular shape, it is going to depend on the number of lone pairs it is. अब स्टेरिक नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो स्टेरिक नंबर 1 का कोई केस बनता नहीं है, बिकॉज इफ यू हैव ओनली वन एटम अटैच्ड, देयर इज ओनली वन पॉसिबल शेप फॉर इट, दैट इज लीनियर. HCl को आप कैसे भी रख दीजिए, HCl इज गोइंग टू बी अ सिंगुलर लाइन टाइप स्ट्रक्चर. 1 का केस हम लोग पढ़ते नहीं है. नाउ स्टेरिक नंबर 2.
स्टेट नंबर 2 भी हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे स्टेट नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे. स्टेट नंबर 2 में you will have the hybridization SP. Electronic geometry, it is going to be linear. Shape is also going to be. We can take a case where we add one lone pair here. That means instead this case ना जो आपके पास shape linear आया है, this is when you have zero lone pair. Zero lone pair. एक lone pair add करेंगे तो still it is going to be linear. So we don't study that. State number 3. Hybridization will be SP2 and geometry is trigonal planar. ठीक है, trigonal planar. Shape अभी if you have zero, then it is going to be again trigonal planar. ठीक है, trigonal planar होता कैसे? Trigonal planar is like this. You have atom A. You have 3 bonds like this. अब इसमें अगर आप एक लोन पेयर ऐड कर दें, मतलब 3 जो स्टेरिक नंबर है ना, जिसमें सराउंडिंग एटम अभी 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0. But if we had 2 surrounding atom and 1 lone pair, that means we are adding 1 lone pair, then what will happen? A में एक ऐसा lone pair यहाँ पे आ गया, and the 2 bonds are as it is like this. So now it has become what? Bent. ये क्या हो चुका है? बेंड हो चुका है. एक और ऐड कीजिएगा तो फिर ये लीनियर हो जाएगा. ठीक है, तो एक सराउंडिंग एटम इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियर. देखिए नेक्स्ट है आपके पास 4, सेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल को हम टीडी से डिनोट करते हैं. द शेप विल बी व्हाट? इस तरह से शेप होता है. इफ यू ऐड वन लोन पेयर, लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ए में एक लोन पेयर आ गया, नाउ यू हैव टी लाइक दिस. दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम पिरामिड. जिसका बेस कैसा होता है? ट्रायंगल बेस होता है. सो नाउ पिरामिड. एक और लोन पेयर ऐड कर दीजिए. We'll have 2 lone pairs like this, and there will be 2 bonds like this. Now it has become what? Bent. ठीक है, अगला देखिए. Next is 5, that is sp3d. Here the electronic geometry is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. ठीक है, तो इसको TBP से डिनोट करते हैं. TBP. A trigonal planar type of in the middle of the thing, that means equatorial बोलते हैं इसको, और axial वाले में you will have straight lines. Now one thing that you should memorize in this case is I'm writing red bonds here because these will be having more lone pair, they will be having more repulsions. ठीक है ना, उसका रीजन अभी आप छोड़ दीजिए. इसका रीजन सिंपल ये है कि this red one is at 90 degree with 3 of the bonds, है ना. और ये जो है आपके पास, this is only at 90 degree with 2 of the bonds. इससे 90 डिग्री पे और इससे 90 डिग्री पे. ठीक है, that is why the red one is going to have more repulsion. If red one is going to have more repulsion, it is not the best place to add lone pairs. तभी जब हम lone pair डालते हैं, then we add the lone pair in the equatorial positions and we get A, and here we have added lone. ठीक है, यहाँ पे lone pair add कर. If you rotate the structure, it will seem like this, which is seesaw. ठीक है, if I am going to add one more lone pair, then what's going to happen? If we add one more lone pair, then I am going to add 2 lone pairs in the equatorial position. We'll have A. So here, these 2 places I have added the lone pairs. Now this is the shape. Here we have the bonds, and it is going to be T shape. Understood till here, Isanobi Salmi? Hiram and Alia? Does it make sense till here? Yes. Next आप देखिए 6. 6 में hybridization is sp3d2. Shape is octahedral. Here each and every bond is same. Octahedral is completely symmetrical. So here I will write OCT, and for A I will show it like this. Then if I add one lone pair, our A will become something like this. So this is kind of pyramidal, but it is square pyramid.
Can you please write it down? Okay, square pyramidal, and you have got one lone pair here. You can add one more lone pair, and you will get A. You'll have our lone pair, below lone pair, and these four are like this. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या शेप आ जाएगा? दिस इज स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, चलिए प्लीज इसको लिख लीजिए जरा. Raise your hand once you're done. Waiting for Kiran. Done. Okay. एक सवाल करिए, उसके बाद सृष्टि करते हैं आपको. ऑप्शन देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन से आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला. 3 2 3 4, 4 3 4 3, 1 4 2 1, 2 1 1 2. तो देखिए ए ऑप्शन अगर आप चूज कर पाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा. A3, A3 ठीक है, ए ऑप्शन चूज कीजिए, उसके बाद सी ऑप्शन चूज कीजिए, बिकॉज इन ए ऑप्शन यू हैव 3 3, उसके बाद 2 4 है. ठीक है ना, तो काफी आसानी से आंसर मिल जाएगा. आंसर क्या लिया?
चलिए देख लें। NH3 का टी शेप क्यों किया है आपने इरम? इरम, कैन यू प्लीज गो थ्रू हाउ यू हैव डन दिस? जी इरम। Sir, randomly selected. सॉरी, Sir, व्हाट डिड यू से इरम? randomly selected. रैंडमली क्यों सिलेक्ट किया? पढ़ा किस लिए फिर हमने? रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए पढ़ा है क्या? थोड़ा टाइम देके कर दीजिए ना, हो जाएगा तुरंत। कीजिए। नाइट्रोजन में सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालिए। ठीक है, कीजिए कीजिए, ऐसे नहीं तुक्का मारे। अभी पढ़ने का क्या फायदा फिर तुक्का मारने का? और ये हो जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें। ठीक है, सराउंडिंग एटम कितने, लोन पेयर कितना हो जाएगा। once you get all of those you will get the स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर से आपको क्या मिलेगा? स्टेरिक नंबर से आपको मिलेगा ज्योमेट्री। देन लुक हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर। उस ज्योमेट्री में एक लोन पेयर डालने से व्हाट शेप वी आर गेटिंग। आगे का आंसर देखते हैं। आगे और सीम्स करेक्ट। जी मैडम, NH3 का मिला। हम्म। यस मैडम, टेल मी। Yes, sir. It's क्या मिला बताइए। square. 200 बोलिए जरा प्लीज। सॉरी, So first one. पहले ही ऑप्शन NH3। अरे भाई, ए का 3 मिला ना, इसके बाद सी का निकालिए, क्या मिलेगा सी का। बिकॉज A3B4, A3B4 तो सेम है। सी में 1 और 2 का ऑप्शन चेंज आ रहा है ना, सी का निकालिए कितना निकलेगा। व्हाट वुड बी द शेप फॉर सी? One. सी का निकला क्या? 1। 1 निकला सी का? बताइए, तुक्का मार रहे हो ना 1 में फिर से आप? आयरन तुक्का मार रहे हैं ना। फॉस्फोरस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, डू यू हैव एनी आइडिया? देखिए, नाना पार्टिकल has various of दिमाग, तो नाना पार्टिकल वाले में आ रहा है ना। फॉस्फोरस में कितना? देयर आल्सो 5 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। नंबर ऑफ बॉन्डिंग 5, लोन पेयर विल बी 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 5। स्टेरिक नंबर 5 में ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, एंड दैट विल बी द शेप आल्सो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लोन पेयर। तो सी का क्या आएगा? 2 आएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे इसको कर लीजिएगा मैडम, इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, कोई साल ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसमें सवाल नहीं आता हो। ओके, गॉट इट मैडम। Yes, sir. ठीक है, इससे जरूर सवाल आएगा। ईच एंड एवरी, मतलब सारे, हर साल इससे कुछ ना कुछ